Hello everyone, welcome back to the Socio Quest. Today we are going to discuss one of the most important thinker, Herbert Marcuse, who belonged to the Frankfurt School of Critical Theory, and he was a German American philosopher and a leading figure of critical theory. So let's move on to our topic. Herbert Marcuse was born in 1898 and passed away in 1979. So remember this. Now let us understand his major contribution. First, let's look at his major book names. The first one is Hegel's Ontology and the Theory of Historicity, and the second one is Reason and Revolution, and the third one is Eros and Civilization, and his most famous book is One Dimensional Man. This is very important for UGC net perspective as well as set examination. Okay, so remember this, and if you guys want to take a screenshot, then please take it. Now let's see the fifth one. The fifth one is A Critique of Pure Tolerance, and the sixth one is Kultur and Gesellschaft. This is in German language, in English, culture and society. Okay, so remember this. And the seventh one is Negation Essay in Critical Theory. The eighth one is An Essay on Liberation. The ninth one is Culture and Society. And the 10th one is Counter Revolution and Revolt. This is also important. Okay. The 11th one is Studies in Critical Philosophy. And the 12th one is The Aesthetic Dimension. Okay. Now we will see his major contribution and the major concepts. Okay. One Dimensional Man. In his influential book, Marcuse argued that modern industrial society creates conformist individuals who are integrated into the existing system, and he introduced the concept of one-dimensional thinking, and where people are conditioned to accept the status quo, conform to consumer culture, and suppress critical thoughts. Okay, so remember this. इस बुक में उन्होंने वन डायमेंशनल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था. सो रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स सी इन हिंदी एज वेल. वन डायमेंशनल बुक में मार्क्यूज का तर्क है कि औद्योगिक समाज अनुरूपवादी व्यक्ति का निर्माण करता है. ओके, एंड इसी बुक में उन्होंने एक आयामी सोच की अवधारणा डेवलप की थी. सो रिमेंबर दिस टू की पॉइंट्स. ओके, दैट्स इनफ फॉर अस. Now let's move on to the next concepts. The next concept is the integration of society. Marcuse believed that advanced industrial societies, the boundaries between individual and society are blurred. Okay, समाज का एकीकरण में मार्क्यूस का मानना था कि उन्नत औद्योगिक समाजों में व्यक्ति और समाज के बीच सीमाएं धुंधली होती जाती है. लोग उपभोक्तावाद, जन संस्कृति और गैर तकनीकी प्रगति के माध्यम से सिस्टम में एकीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके कट्टरपंथी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन में शामिल होने की संभावना कम हो जाती है. ओके, सो रिमेंबर दिस लाइन. Let's move on to the next concept. The next concept is repressive tolerance. Okay, so remember this. और ये ऐसे था उनका, इसमें उन्होंने लिबरेटिंग टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था. दमनकारी सहिष्णुता, इसमें उन्होंने मुक्त सहिष्णुता की अवधारणा दी थी. सो रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इरोज एंड सिविलाइजेशन. ये उनकी बुक है. सो रिमेंबर दिस. ओके, and now let's move on to the next concept. This is very important concept. Okay, the great refusal. Marcuse encouraged what he called the great refusal, which involves individual rejecting and resisting the conformist and repressive aspects of society. Okay, he believed that a new consciousness
and social transformation could arise through act of the resistance and non-conformity. ओके, महान इनकार। महान इनकार ने उसे प्रोत्साहित किया जिसमें व्यक्तियों द्वारा समाज के अनुरूपवादी और दमनकारी पहलुओं को अस्वीकार करना है और उनका विरोध करना शामिल है। ओके, so remember this is very important. Now let's move on to the next concept. The next concept is critique the cultural industry. Okay, सांस्कृतिक उद्योग की आलोचना, ये उनका एक और कॉन्सेप्ट था। ओके, Marcuse critique the culture industry which encompass mass media, entertainment, and popular culture. He argued that the culture industry controlled by capitalist interest and homogenized culture and commodified okay art and knowledge contributing to the social conformity. मार्क्यूज ने संस्कृति उद्योग की आलोचना की जिसमें मास मीडिया, मनोरंजन और लोकप्रिय संस्कृति शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी हितों द्वारा नियंत्रित संस्कृति उद्योग संस्कृति को समरूप बनाता है, ओके, और कला और ज्ञान का उपभोग करता है जो सामाजिक अनुरूपता में योगदान देता है। ओके, सो रिमेंबर दिस. So these were the few important concepts of Herbert Marcuse. Okay, I hope you guys enjoy the session. So that's all for the today's video. We'll meet again in next session with another important thinker. Okay. And if you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. And thank you for watching. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care. और अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में किसी और नए थिंकर के साथ मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।